So this is the question number 13 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a list with the name of L has been given to you, and it has been asked what will be the value of L after performing the pop function. तो pop function की functionality perform करने के बाद आपके पास L के अंदर क्या content बचेगा. So in order to answer this one, first of all you need to be aware कि pop function कैसे काम करता है. तो इफ यू सी पॉप फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है एज एन इंडेक्स वैल्यू. तो जो भी आप इंडेक्स वैल्यू पास ऑन करोगे पॉप फंक्शन के अंदर, अगर वो इंडेक्स अवेलेबल होगा तो उस वैल्यू को क्या कर देगा, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू अवेलेबल है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसके अंदर क्या इंडेक्स पास है, 4. तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 3 4 एंड 5. तो 4 पे एलिमेंट क्या है आपका, 4. तो लकीली क्या है, इंडेक्स नंबर 4 पे एलिमेंट भी क्या है, 4. तो अब क्या होगा, वंस यू परफॉर्म एल डॉट पॉप ऑफ 4, तो उस केस में क्या होगा, ये एलिमेंट जो 4 है, सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन द इंडेक्स नंबर 4, तो ये एलिमेंट क्या होगा, लिस्ट से रिमूव हो जाएगा. हेंस आफ्टर परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन वी विल लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जिसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट 4 जो कि इंडेक्स नंबर 4 पे है वो क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा. Hence, for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this one. Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask. Okay, then, thanks for your time.